Okay, मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया था, पहले we have a master file, okay, which has not been tempered, then we have a transaction file, and then we have is a new master file. So new master file is the file that has the changes made into it. आपने ट्रांजैक्शन फाइल में कोई नई चेंजेस डाली, ये चेंजेस आपने अपडेट करके जब अपडेट की तो दे हैव बीन रिटर्न टू द न्यू मास्टर फाइल. इसलिए while master file record to new master file. Okay, so this is the concept here. You should know what's happening. Master file, transaction file, master file. Okay, so transaction file मैं दोबारा बता रहा हूँ कि why is it important, because you don't want to do all the processing on the original file. All those fields जो change हो रही हैं, records change हो रहे हैं, they need to be dealt separately. Okay, उससे processing fast हो जाती है. Processing will be much more faster, which is known as your new master file. So इसको directly मैं आपको explain करता हूँ, you will be able to get it. Please have a look at this. Let's इसको देख लें. This is one of the most complication question आपको आ सकता है, but it's not very complicated. Okay, so let's have a look at it. A possible answer to the specimen paper question is this. So read first record in the transaction file. मैंने आपको भी बताया था कि that's what we do. हम transaction file में data read करना शुरू करेंगे. We'll start reading the data in the old master file as well. मैं step by step आपसे पूछूंगा कि is it clear? Is this clear? Yes or no? Yeah? Yes, sir. Okay, right. While not end of transaction file. Okay, while we have not reached till the end, मतलब हमारे पास records हैं. Okay, and while we have not reached till the end of the file, if transaction file ID is equals to master file ID, वही मैंने आपको बात explain की थी अभी कि we are comparing both of them. Well, this ID has to be compared to this ID, and remember, both of them have to be in the same order for comparison to be done. ये एक rule होता है. Okay, why if this is equals to this, then अगर ये equal है, then क्या करें? If transaction is equals to A, then write transaction file record to new master file. If transaction is A, then write transaction file to the new master file. अगर वो A आता है, okay, ये actually ये specimen पर क्वेश्चन है, मैंने अभी ओपन नहीं किया. उसमें क्वेश्चन ये था कि अगर A आए तो फिर क्या करें, अब B आए तो क्या है. अगर वो A है, then write the transaction file master file. So अगर वो ये ढूंढ रहा होता है, अगर ट्रांजेक्शन उसको A मिलती है तो फिर वो राइट कर देगा this to the new master file. Okay, right? And if read next transaction file record, read next master file record. So one by one करेगा. Else, while master file ID number is less than the transaction file ID number. Okay, while master file ID is less than the transaction file ID number, write master file record to the new master file. Read next master file record. Yes, इस बात की समझ आई इसमें आपको? लाइबा, take your time. Tell me. Yes, sir. क्या मतलब है इसका लाइबा? रिपीट कर दें. मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब कि while master file ID number what does it mean? इससे मैं पूछ रहा हूँ कि what does it mean? कि अगर ये नंबर उसका मैच नहीं कर रहा तो फिर उसको चेंज करना है. Exactly. Laiba, what do you say? So I was asking you to repeat the question. मुझे समझ नहीं आया था आप क्या पूछ रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि what's happening over here? While master file ID number is less than the transaction file ID number, write master file record to the new master file. Okay, this is your master file, this is your transaction file, and then here is a new master file. That's your new master file. Okay, ये तीन आपके comparisons हो रहे हैं. Okay, तो कह रहा है कि while master file ID number, okay, जो आपके पास इधर है, ये master file आपका, ये वाला, first वाला, this is master file. Okay, if this master file का जो ID number है, if it's less than the transaction file ID number, okay, then you do what? Write master file
record to the new master file. क्यों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर जी बोलो. सर इसमें तो सिर्फ अगर आईडी नंबर मास्टर फाइल नंबर का लेस देन है तो ट्रांजैक्शन फाइल में चेंज होगा. अगर ग्रेटर देन होने पे भी हमें चेंज करना हो तो हम एक और फाइल लिखेंगे. यस, वैसे मैं ये देख रहा एग्जैक्टली था, एक और फाइल होना चाहिए था. हालांकि तो सर ऐसे नहीं रखेंगे कि अगर हम नॉट इक्वल टू इस्तेमाल कर लें मेरा बात सुनो, इस्तेमाल हो जाएगी. मेरी बात सुनो. आई डिड नॉट ओपन द क्वेश्चन में डाउनलोड नहीं किया. एक्चुअली स्पेसिफिन पेपर का क्वेश्चन था. मे बी उन्होंने यही लेस देन तब लिखे, वरना तो बिल्कुल सही कह रही, होना चाहिए था. ये नीचे ट्रांजैक्शन फाइल में इक्वल टू यूज किया मैं. if transaction file is equals to I, then ये क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने दिया है ना. क्वेश्चन डिपेंडेंट. हाँ, क्वेश्चन के मुताबिक मैं क्वेश्चन पढ़ के इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे. बट आई एम श्योर इसका देखो ना, ये ए और आई और ये कंडीशन जो है क्वेश्चन की होंगी, वरना तुम टेक्निकली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. अगर भरी है तब भी तो राइट करे ना मास्टर फाइल में. ये तो नहीं ना कि तब भी राइट करे, है ना. दैट मेक सेंस व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है. इफ ट्रांजैक्शन फाइल इज आई देन राइट ट्रांजैक्शन फाइल टू मास्टर फाइल. ठीक है, और हमने एंड कर दिया. ठीक है, ये आराम से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आया था. मगर दिस इज अगेन आप देख रहे हो, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी बार बार. हम आई गिव यू लाइक एक्टिविटीज टू सॉल्व, जो आपने सॉल्व करनी है, सो दैट ये वाला पॉइंट हमारा अच्छा कवर अप हो जाए इन थ्योरी. ओके, लूज अ सिंगल मार्क. बट यस, ये डायरेक्टली आपने इस पे नहीं आना. आपने पहले बेसिक प्रॉब्लम्स, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस अपने मेरे साथ करनी है. देन यू विल बी एबल टू डू दिस 100% वेल. It has to go in a flow, right? यस सर. ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सर आप नोट्स अपने तक शेयर करेंगे? क्या बेटा? आप नोट्स अपने सुबह पहुंचे कब तक शेयर करेंगे? जी बेटा, मैं आज दोपहर तक शेयर कर दूंगा. ठीक है. एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग का पॉज कर दूं. मैंने इसलिए ऑनलाइन क्लास रखे थे. आई एम सो सॉरी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग